एवरीवन, आई होप आप लोग अच्छे हो, खुद का ख्याल रख रहे हो और सही से क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हो. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न अ स्मॉल कॉन्सेप्ट दैट इज कोरोना डिस्चार्ज. एंड इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंडिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द surface of irregular conductor. Okay, and to make you understand this charge distribution on irregular conductor, I will be taking first the case of regular conductor. So let us say we have two conducting spheres. एक का रेडियस आप r1 ले लो और दूसरे का रेडियस आप क्या मान लो r2 ले लो. लेट अस से on the surface of this conductor charge is q1 and on the surface of this conductor charge is q2. Let me ask you one thing. What will be potential at a point on the surface of first conductor? So formula आप यूज करोगे, आप कहोगे मैम KQ1 by R1. Let us call it V1. And similarly surface 2 के पॉइंट्स पे पोटेंशियल कितना होगा? Let us call it V2. So that will be KQ2 by R2. Then let us say V1 is not equal to V2 and further let us say V1 is greater than V2. Now what I'm going to do, I'm going to establish connection between these two conducting sphere via conducting wire. क्या होगा बताओ, अगर यहाँ पे इसका पोटेंशियल V1 है, इसका पोटेंशियल V2 है और आपको पता है कि V1 is greater than V2 and you have connected them via conducting wire. What is going to happen? Charge will flow from high potential to low potential. This thing you will study more in current electricity. So yeah, charge flow will occur. And charge will flow until the time potential of these two conductors become equal. डन है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि अगर दो पॉइंट कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट होता है तो पोटेंशियल सेम होता है इन दोनों पॉइंट का, 1 and 2 का सेम होगा. क्यों? क्योंकि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कंडक्टिंग वायर, यू आर टॉकिंग अबाउट वायर हैविंग जीरो रेजिस्टेंस. सो along the length of conductor nowhere potential is going to drop. अगर potential drop नहीं कर रहा है तो whatever potential is at one point should be potential at 2 point. वही potential 2 point पे appear होगा. समझ रहे हो? So I mean, when you're connecting these two conductors via this conducting wire, then charge flow will happen, and charge flow will happen until potential of these two surfaces become equal. So let us say finally it had charge Q1 dash, and finally this had charge Q2 dash. Okay, and finally both will have potential equal. So let's say they have potential equal to V. अगर यहाँ पे आप इक्वेशन में इसको पुट करते हो, V का वैल्यू निकालो. So that can be written as KQ1 dash by R1 and also that can be written as KQ2 dash by R2. So clearly you are getting what? Q1 dash by Q2 dash is equal to what? This is equal to R1 by R2. सॉर्टेड. सो हमें क्या दिख रहा है? हमें दिख रहा है कि अगर दो चीज अगर पोटेंशियल सेम शेयर कर रहा है, देन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन देयर सर्फेसेस will be directly proportional to the radius. So charge distribution is going to be directly proportional to the radius. यहाँ से JEE मेंस और नीट में बहुत बार क्वेश्चंस आए हैं. So I will tell you कि इसमें और आप क्या क्या कर सकते हो. Now let us understand कि surface charge density finally किस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है. So let us calculate surface charge density for the first conductor. Let us indicate it by sigma 1. So that will be Q1 dash by surface area, that is 4 pi r1 का square, and sigma 2 will be equal to how much? Q2 dash by 4 pi r2 का square. आप इन दोनों को डिवाइड कर लो. So what you will be getting? You will be simply getting sigma 1 by sigma 2 is equal to Q1 dash by Q2 dash and this into R2 का square, this is R2 divided by R1 का square. We know that Q1 dash by Q2 dash is equal to how much? R1 by R2. So let us put it over here, R1 by R2 into R2 का square by R1 का square. So यहाँ से अगर आप इसको कैंसिल करते हो तो आपको कितना मिलेगा? R2 by R1. So sigma is inversely proportional to radius. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसका रेडियस क्या है? कम है. इसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है. इसका रेडियस ज्यादा है, इसके पास सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है. बट इस पे चार्ज ज्यादा है और इस पे चार्ज कम है ना. कुछ ऐसा हमें समझ में आया. अगर हमसे क्वेश्चन में ये पूछता है कि आप बताओ फाइनली ऑन द सरफेस ऑफ फर्स्ट कंडक्टर हाउ मच वैल्यू ऑफ चार्ज इज देयर. अगर आपको Q1 डैश का वैल्यू निकालना है, Q2 डैश का वैल्यू निकालना है, हाउ यू कैन डू दैट? See, if you consider these two as a system, then after connection is established, whatever is happening between these two conductors. So charge is not leaving the system.
अगर इन दो कंडक्टर्स को हम सिस्टम मानते हैं तो चार्ज हमारा सिस्टम को लीव नहीं कर रहा और ना ही सिस्टम के बाहर से कहीं से चार्ज आ रहा है. सो दिस सिस्टम इज आइसोलेटेड सिस्टम, सो चार्ज विल बी stay constant. That will be staying constant, right? So this is constant. Finally, charge is how much? Q1 dash plus Q2 dash. So this is also the same constant. So clearly Q1 plus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash. Q1 plus Q2 is equal to Q1 dash plus Q2 dash. Let us call it equation 2 and let us call this equation 1. By using 1 and 2, you can clearly calculate Q1 dash and Q2 dash because we have two variable Q1 dash and Q2 dash and we have two equations. We can clearly reach to that conclusion. ठीक है. अब चलो अब हम बढ़ते हैं कोरोना डिस्चार्ज की तरफ. जैसे यहाँ पे I took two conductors separately, then I connected them via conducting wire and then we got to see कि जो तुम्हारा surface charge density होता है inversely proportional to radius होता है. और ये कब आया? When we were saying कि okay, those two conductor surfaces are at same potential. एंड वी नो दैट जो कंडक्टर होता है वो क्या होता है, उसका सरफेस या उसके इनसाइड हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है. सो इफ आई टेक एनी इरेगुलर कंडक्टर, इरेगुलर यानी कि हर कर्वेचर का रेडियस डिफरेंट है, लेट्स से, and you are giving it charge q, you know that at each point potential is same. So if potential seen here also is holding true, then we can clearly say that sigma will be inversely proportional to radius. Meaning, this q charge which you're giving to this conductor, this will I mean go and sit at different places differently. हर जगह पे जैसे जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा वहां पे तुम्हारा क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा दिखेगा तुम्हें, और जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा अमाउंट ऑफ चार्ज लेगा. डन है. सो लेट अस अप्रिशिएट दिस कर्व मोर. उसके लिए इस डायग्राम में जाते हैं. यहाँ पे आपको किस पॉइंट का रेडियस सबसे कम दिख रहा है, इस पॉइंट का, है ना. ये ऑलमोस्ट पॉइंटेड है और ऑलमोस्ट पॉइंटेड कहने का मतलब रेडियस इज टेंडिंग टू 0. सो हियर सिग्मा विल बी वेरी वेरी लार्ज. सो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी इज वेरी मच ग्रेटर. और इसकी वजह से क्या होगा बताओ. आपको पता है, मैंने पहले भी पढ़ाया कि कंडक्टर के सरफेस के जस्ट ऊपर के पॉइंट पे व्हेन यू टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, then that is equal to sigma by epsilon naught. This is the formula. Sigma is surface charge density at that of the surface just below that point, right? So this is the electric field. अगर सिग्मा किसी भी पॉइंट पे बहुत ज्यादा है, देन इन दैट रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी ग्रेटर. और इलेक्ट्रिक फील्ड ग्रेटर होने से क्या होगा, लेट्स से यू हैव केप्ट दिस कंडक्टर इन एयर. सो एयर इज अ डायलेक्ट्रिक. डायलेक्ट्रिक मीनिंग इंसुलेटर. इंसुलेटर का सिनोनिम है डायलेक्ट्रिक. सो जब भी कोई डायलेक्ट्रिक बोलता है ना तो आप समझना इंसुलेटर. सो लेट अस से दिस कंडक्टर इज केप्ट इन एयर. एयर इज इंसुलेटर. बट इवन इफ इट इज इंसुलेटर, इट हैज न्यूट्रल एटम्स, राइट? एंड दोज न्यूट्रल एटम्स का स्ट्रक्चर क्या होगा, कोई भी एक एटम को फोकस करो, न्यूक्लियस होगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा. ठीक है. एंड इफ इन दिस रीजन यू this electron is experiencing very strong electric field, then that because of that strong electric field, it will experience force which may be greater than that of electrostatic force it is experiencing because of the positive charge in nucleus. So agar tumhara electric field strength is of the range 3 into 10 to the power 6 volt per meter, this is given in your NCERT. This is called the डायलेक्टिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर. जैसे किसी भी इंसान का एक स्ट्रेंथ होता है, कुछ लिमिट तक ही वो अपने लाइफ में ट्रेजेडीज को झेल सकता है, उसके बाद वो ब्रेक कर जाता है. उसी तरह से इंसुलेटर को आप समझो, दैट इज इंसुलेटर, दैट इज इन इट्स नेचर अप टू सर्टेन लिमिट. इफ फॉर एयर if for air electric field reaches to this value, then air loses its nature of being insulator, it breaks down, and when it breaks down it become conductor. क्योंकि देखो यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन snatch out हो जाएगा, then what will happen, you will be getting free charges. So free positive and negative charge will be there in the surrounding, and if free positive and negative charge is getting created in the surrounding, what will happen, whatever nature of charge is on the surface of conductor, it will attract opposite charge onto its surface. जैसे इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दिया था, देन इट विल अट्रैक्ट नेगेटिव ऑफ दोज फ्री चार्जेस,
and then what will happen, you will feel like this conductor surface is losing its charge, क्योंकि ये जब नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नलिफाई हो रहा है. So you will feel like this conductor surface is losing charge. That basically is called corona discharge. So corona discharge होने के लिए we make conductor pointed. Pointed होने का मतलब क्या होता है, सिग्मा यहाँ पे ज्यादा होगा. In this region you can get strong electric field, and a strong electric field can cause dielectric breakdown. Okay. So yeah, it was this. I hope everything is clear, but in case you're having any doubt or anything to say or discuss, you can always let me know in the comment section. And I thought to discuss this concept because in lectures ahead, I will be using these terms ki irregular surface pe charge kaise distribute hoga. So I just thought to create this small video so that I can make you aware of this one. Okay. Thank you. Take care of yourself. Bye-bye.